हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और इस वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन जो है एडिशन की वो ये है कि जो मैट्रिक्स है उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 9 3 5 and matrix B is equals to 8 4 minus 7 and 5. Now add these two matrices A plus B. Firstly we write here elements of matrix A, then write elements of matrix B. Simple addition, we have to add corresponding elements, that is in A there is 2 at position 1 1 A11, and in matrix B there is element 8 at position A11. So we have to add corresponding elements, so this becomes 2 plus 8 and A12 element is 3 in matrix A and A12 element is minus 7 in matrix B. So we have to write 3 minus 7 at place A12. Similarly, we add corresponding elements 5 plus 5. And on adding these, we have 10 minus 4, 13 and 10. And this is the solution of addition of A and B matrices. Let's do another example. If we have a matrix A 2 1 minus 2 3 0 1 minus 4 6 and 5, and matrix B is, and we have to find A plus B. Now firstly check order of these two matrices is same. This is of order 3 cross 3 and this is also 3 by 3. So firstly write A plus B. Now writing the matrices. Now similar basis पे हमने corresponding elements को ही ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 2 plus 5 3 plus 1 minus 4 plus 2, and सेकेंड जो रो होएगी वो क्या होएगी 1 plus 6 0 minus 1 and 6 plus 4 minus 2 plus 5 1 plus 3 and 5 minus 4. और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा यहाँ पे 7 4 minus 2 7 minus 1 and 10. Next is 3 4 and 1. This is the required matrices after the addition of given two matrices. Next is we have some properties based on addition of matrices. First property is addition of matrices is commutative. That means if we have two matrices A and B, then अगर मैं A plus B करूँ या फिर B plus A करूँ, दोनों का जो आंसर है, जो भी मैट्रिक्स इनको ऐड करने के बाद आएगी वो सेम होएगी. फॉर एग्जाम्पल if we have a matrix A equals to 2 6 5 minus 9 and matrix B equals to 8 minus 7 4 and 10, then firstly we find A plus B, which is 2 6 5 minus 9 plus 8 4 minus 7 and 10. Now we have 2 plus 8 5 minus 7 6 plus 4 and minus 9 plus 10. Solving this we get 10 minus 2 10 and 1. Okay, this is the matrix obtained by adding A plus B. Now we have to find B plus A. So firstly we write the elements of matrix B 8 minus 7 4 and 10. Then
elements of matrix A 2, 6, 5 and minus 9. This becomes 8 plus 2 and minus 7 plus 5. Here is 4 plus 6 and 10 minus 9. We get 10, 10, minus 2 and 1. Now elements of the matrix A plus B and B plus A are same. This implies on addition matrix A plus B which is equals to B plus A. So commutative property holds on addition of matrices. So commutative property holds in addition of matrices. Next property is addition of matrices is associative. That is, if we have three matrices A, B and C और अगर हम पहले B and C मैट्रिक्स को ऐड कर लें फिर उसमें A मैट्रिक्स को ऐड करें या फिर हम पहले A प्लस B को ऐड करके फिर उसमें कोई मैट्रिक्स C ऐड करें, जो भी हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1, 4, 3, 5 and matrix B is equals to minus 2, minus 6, 5 and 3 and elements of matrix C are equals to 2, 6, 4 and 8. Now firstly we operate A plus B plus C. तो हम पहले B plus C को ऐड करेंगे and we have minus 2, minus 6, 5, 3 plus 2, 6, 4 and 8. On solving this we have 2 minus 2 plus 2, 5 plus 4, minus 6 plus 6, 3 plus 8 and we get 0, 0, 9 and 11. Okay, now we have to add matrix A. So A plus B plus C. Elements of matrix A are 1, 4, 3, 5 and elements of matrix B plus C is here. That is, we have to add 0, 0, 9 and 11. On adding this, we have 1 plus 0, 4 plus 0, 3 plus 9, 5 plus 11 and we get 1, 12, 4 and 16. Okay, now we have to find A plus B. Elements of matrix A are 1, 4, 3, 5 and B is 2, minus 6, 5, 3. On adding this, 1 minus 2, 4 minus 6, 3 plus 5 and 5 plus 3 which is equals to minus 1, minus 2, 8 and here is also 8. Next is we have to add matrix C to A plus B. Then we have A plus B plus C. Elements of matrix A plus B are minus 1, minus 2, 8, 8 and elements of matrix C are 2, 6, 4, 8. Now on adding this 1 minus plus 2, minus 2 plus 6 and 8 plus 4 and 8 plus 8, we get 1, 4, 12 and 16. Now we can see that these two results are same. So this implies that matrices are associative. That means if we have three matrices, then we can add any two matrices firstly, then add third matrices to them and we get same result. Next is scalar multiplication. Let's suppose if we have a matrix A whose elements are 2, 3, 5 and 9 and अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई होएगा सारे के सारे एलिमेंट्स से. कोई भी अगर हम स्केलर जो है 3 यहाँ पे स्केलर होएगा
उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा. दैट मीन्स वी गेट 6, 9, 15 and 27. So this is known as scalar multiplication. That is, if we have any scalar k multiplied to any matrix A, then it will be multiplied to all the elements present in matrix A. Okay? Now we have two properties based on this. First property is k and A plus B, where A and B are matrices and k is एनी स्केलर एंड ए एंड बी जो भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है. तो यहाँ पे अगर मैं दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करके उनको के के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर के जो है पहले ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और फिर बी के साथ और इन दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दूँ, तो वी गेट दी सेम रिजल्ट. दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. Next is, if we have two scalars k plus l multiplied to a matrix A, अगर मैं इन दो स्केलर्स को ऐड करके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं k को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करूं और l को भी a के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, then we also get the same result. These are the two properties based on scalar multiplication. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to channel, and thank you for watching the video.